आईब्रो शेडिंग बनाने के लिए पेंसिल, इरेज़र और स्केल का यूज़ होता है। पहले हम फीमेल आईब्रोज बनाएंगे और फिर मेल आईब्रोज बनाएंगे। तो चलिए अब हम फीमेल आईब्रोज कैसे बनाई जाती है वो सीखते हैं। जनरली फीमेल आईब्रोज 3.5 सेंटीमीटर की होती है। आईब्रो शेडिंग बनाने के लिए हमें दो चीज़ें आनी चाहिए। पहली कर्व लाइन और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेडिंग करना अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी हम आईब्रो शेडिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मेल आईब्रोज कैसे बनाई जाती है वो सीखते हैं।